ये सुन के ना आप बोलोगे भाई क्या कमाल का प्लान था. This is considered one of the best deceptions on the battlefield in military history. So, how do you defeat an army which is twice your size on a battlefield which has been chosen by the enemy? Alexander the Great ने ये करके दिखाया with brilliant tactical genius which still blows military minds today. So, this takes place in 331 BC. Alexander the Great is facing Persian king Darius III. It's called the Battle of Gaugamela. Now, Alexander has about 40,000 troops, while Darius is said to have more than 100,000 troops. Cavalry, chariots, elephants, सब कुछ है उसके पास. और जैसा कि मैंने बताया, Darius chose the battlefield, wide open plains which are perfect for the Persians. But Alexander के पास एक plan है. What he does is, he moves his army diagonally towards the right. उससे क्या होता है? Persian troops are drawn towards their left and Alexander's right, away from the center. So Darius जब Alexander को ऐसे जाते हुए देखते सामने से, उनको लगता है भाई ये तो मुझे flank करेगा, तो वो अपने forces उधर भेज देते हैं. Now what that did is they stretched the Persian lines और जो उनका center था वो हो गया thin. And that was Alexander's plan. That's when he struck. जब Alexander ने देखा कि भाई Persian जो center है वो weak हो गई है, he shifted diagonally to his left and charged straight at the center जहां पे उनका किंग Darius III था. Now at the same time his elite infantry जिनको companions कहते थे, they broke through the gap like a spear. अब जब ये दृश्य उनके सामने हुआ, Darius III थोड़े से डर गए. उनकी गई फट, तो वो बैटलफील्ड छोड़ के निकल लिए. Now when he left, the whole Persian army came in a massive state of chaos, ending in their defeat at Gaugamela. And in the bigger scheme of things, it did not turn out to be a single case of defeat in the battlefield. It began the end of the Persian Empire. Despite being outnumbered, Alexander won the day using his tactical brilliance, misdirection, and perfect timing. Moral of the story हम दोनों के लिए बड़ा simple है. It's once again a reminder that the odds would be against us a lot of times in life, but अगर थोड़ा दिमाग लगाए, हम वो सिचुएशन भी जीत सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. माय नेम इज शायन. मुझे मिलिट्री हिस्ट्री में काफी दिलचस्पी है, तो ऐसा कोई मिलिट्री टैक्टिकल ब्रिलियंस के बारे में आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट्स में बताना, एंड आई विल ट्राई एंड मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट. ब्रांड न्यू चैनल है, अगर एक फॉलो या लाइक या कमेंट या ऑल थ्री कर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा.